Hello students, welcome to Infotech Pathshala. In this video, you will learn perspective in communication. It is a part of your first unit, that is communication skill, and communication skills is a part of employability skills. Okay, so let's start. So first of all, what is perspective in communication? Perspective is an individual's point of view through which we interpret and understand every communication happening around us. A communication perspective examines how the messages are transmitted, how it influences the individual and collective behaviors, and how those messages create, sustain, and change culture and communities by exploring the form, content, medium, and patterns of messages. Means आपका दृष्टिकोण क्या है किसी भी कम्युनिकेशन को लेके जो भी घटना घटित हुई है या जो भी मैसेज आपको रिसीव हुआ है आप उसको किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं आपका दृष्टिकोण क्या है उसको देखने का सपोज देयर इज अ ग्लास ऑफ वाटर विच इज हाफ फिल्ड सो वन पर्सन कैन से इट इज हाफ फिल्ड विद एयर एंड द अदर पर्सन कैन से इट इज हाफ फिल्ड विद वाटर सो दिस इज योर पर्सपेक्टिव how you see an event and how you interpret this is perspective in communication. So this is done by examining the aspect like how messages are produced, how they are circulated among people, and how they are interpreted with an eye on the important consequences of messages. Now come to importance of perspective in communication. Communication always makes a difference. Despite the old saying, sticks and stones may break my bones, but words will never harm me. In actual fact, any message has significant consequences for the way we understand ourselves and our place in the world around us. To this end, communication perspective helps us understand some of the most pressing social, political, and cultural issues facing our nation and our world, such as how can communication facilitate high quality doctor patient relationship and contribute to improved health outcomes. Means एक डॉक्टर पेशेंट का जो रिलेशनशिप है वो हेल्थ आउटकम्स को कैसे इम्प्रूव कर सकता है डॉक्टर कैसे किसी पेशेंट की बात को लेता है किस पर्सपेक्टिव में लेता है किस परिप्रेक्ष्य में लेते हैं और उससे कैसे वो उस चीज को हेल्थ बेनिफिट में यूज कर सकते हैं हाउ कैन कम्युनिकेशन फैसिलिटेट डेमोक्रेसी एंड एक्टिव सिटीजनशिप कम्युनिकेशन कैसे डेमोक्रेसी बिल्ड करने में हेल्प करेगा या आपको एक्टिव सिटीजनशिप देगा जैसे अभी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत लोग उसको कैसे ले रहे थे उनका परिप्रेक्ष्य क्या था किस तरह से उसको देख रहे थे और वो क्या योगदान दे रहे थे डेमोक्रेसी डेवलप करने में डेमोक्रेसी बिल्ड करने में नाउ हाउ डू मीडिया टेक्नोलॉजीज ट्रांसफॉर्म कल्चर्स नेशंस एंड जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप तो मीडिया टेक्नोलॉजी है वो कल्चर्स को कैसे ट्रांसफॉर्म कर रही है हमारी जो पॉपुलेशन है मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन विलेज सो वो विलेजर्स जो है वो वहां पर टेक्नोलॉजी कैसे उनको डेवलप करने में हेल्प कर रही है कैसे वो लोग उस चीज को ले रहे हैं उनका परिप्रेक्ष्य क्या है किसी भी घटना को लेकर कैसे वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं हाउ डू कम्युनिकेशन रिलेटेड टू पब्लिक पॉलिसी एंड लीगल एनवायरमेंट शेप द यूज एंड द डेवलपमेंट ऑफ मीडिया टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन जो है वो पब्लिक पॉलिसीज बनाने के लिए या लीगल एनवायरनमेंट को शेप देने के लिए कैसे यूजफुल है इसका ज्वलंत एग्जांपल आप देख सकते हैं पेंडेमिक सिचुएशन में हम लोग जनता को अवेयर कर रहे हैं यूजिंग मीडिया यूजिंग टेलीविजन और यूजिंग अदर मीडिया टेक्नोलॉजी हम उनको मास्क पहनने की हिदायत दे रहे हैं हम उनको वैक्सीनेशन के लिए बता रहे हैं कि आपको कहाँ जाना है कैसे अपने आप को सेफ करना है तो ये कैसे लोग बट ये लोगों का पर्सपेक्टिव है कि वो किस लेवल पे उसको फॉलो कर रहे हैं उनका परिप्रेक्ष्य क्या है किस पर्सपेक्टिव में ले रहे हैं वो इस चीज को now hence acquiring a communication perspective requires learning how to make a positive difference in the world using language symbols and messages. Now, factors affecting perspective in communication. So, first we have visual perception, then we have prejudice, then language, then feelings and emotion, then past experience, and then environment. So, let's see all these factors in details one by one. So first we have visual perception. Visual perception means आप किसी भी चीज को किस तरह से विजुअलाइज कर रहे हैं दो पर्सन यदि हैं और दो पर्सन को एक ही चीज बोला जा रहा है तो वो उसको किस तरह से ले रहा है फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन यदि माउस की बात हो रही है तो एक पर्सन
माउस वर्ड को एक इलेक्ट्रॉनिक माउस की तरह लेता है और दूसरा पर्सन उसको एक क्रिएचर की तरह लेता है. सो द वे वी परसीव अ सब्जेक्ट और एन इवेंट अफेक्ट्स द वे आर थॉट्स about it are converted while communicating, sending, receiving, interpreting, or analyzing a message. So, however, the challenge is that if the sender and the receiver's visual perceptions are not aligned, it can cause barrier in their communication. So, as I've spoken, यदि उनके बीच में जो मैसेज जो सेंडर और रिसीवर जो है वो मैसेज को प्रॉपरली इंटरप्रेट नहीं कर रहे हैं, सेम पर्सपेक्टिव में नहीं देख रहे हैं, तो कम्युनिकेशन बैरियर उत्पन्न होता है और वो उस चीज को विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली. For example, another example you can say, if a 6 is written, so other person can read it as 9 and the uh, first person can read it as 6. So it's their visual perception, how they are interpreting, how they are visualizing that letter. Now, next come to language. Language plays an important role in any communication process where both the sender and the receiver must be reasonably comfortable in the language used. This is because in any communication process, oral or written, the sender encodes the ideas which the receiver decodes to understand and give feedback accordingly. Any lapse on the either side may lead to a communication failure. लैंग्वेज सेंडर और रिसीवर का सेम होना चाहिए, अलाइन होना चाहिए. यदि वो मैसेज को एक ही लैंग्वेज में कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो उनका जो परिप्रेक्ष्य है देखने का यदि वो अलग अलग है कम्युनिकेशन को या मैसेज को, तो दे विल बी अ कम्युनिकेशन फेलियर. नाउ नेक्स्ट कम टू पास्ट एक्सपीरियंस. पास्ट एक्सपीरियंस मीन्स पास्ट में जो आपको एक्सपीरियंस हुआ है और आपका परिप्रेक्ष्य क्या है उस घटना को लेकर और आप किस तरह से आपका कम्युनिकेशन उस चीज से अफेक्ट हो रहा है, that is past experience. Your past experience shapes your attitude towards a person, place, or a situation. The same is true with other person as well. This is normal for two individuals to have different attitude and approach of doing things based on their past experience. For example, एक shopkeeper है, if the shopkeeper has cheated you, so you will not buy things from this shop. So what you will think, I will not buy things from this shop because the shopkeeper has cheated me. Now, second example is if my father scolded me last time for not getting good marks, so this time I will not tell my semester marks to him. So मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ये था कि मेरे फादर ने मुझे डांटा था अच्छे मार्क्स नहीं आने पर, तो अब मैं अपने फादर को वो मेरे मार्क्स नहीं बताऊंगी या नहीं बताऊंगा. सो दिस इज योर पास्ट एक्सपीरियंस. नाउ प्रिजुडाइज मीन्स किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाना, किसी के बारे में पहले से धारणा बना लेना, तो उससे भी कम्युनिकेशन फेलियर हो जाता है. Often communication fails because the sender or the receiver may have some of the other kind of prejudices in their mind which tends to pass some sort of business in the message shared. Come to feelings. Our feelings or emotional state of mind play an important role in the act of communication. People do not see things as they otherwise would when under stress or some sad or angry feelings. Means आप यदि एंग्री है या गुस्सा या हैप्पी है या किसी सीरियस मूड में है या स्ट्रेस है, तो आप उसको किस उसी परिप्रेक्ष्य में देखेंगे किसी भी घटना को. तो ये डिपेंड कर रहा है आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस पे और आपकी फीलिंग्स पे, आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है उस समय. Now, people with high emotional intelligence are likely to be more emotionally stable and is far less affected by their feelings than people who score low on emotional intelligence. Means emotional intelligence जो है plays an important role. How you are taking an event or how you are perceiving. Next, come to environment. Environment, if the environment in which communication takes place is not conducive, that is, it is noisy, overcrowded, filthy, dark, or inadequately ventilated, it may affect the communication process adversely. यदि प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, एनवायरनमेंट नॉइजी है, सो आपका जो पर्सपेक्टिव है कम्युनिकेशन को लेकर वो आपका डिफरेंट हो जाएगा. आप डार्क एनवायरनमेंट में है तो आप किसी भी चीज को सही से देख नहीं पाएंगे, तो आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग. या क्राउडेड एरिया के अंदर है, ओवर क्राउडेड एरिया में है, आप प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी चीज को सुन नहीं पा रहे हैं, तो आपका पर्सपेक्टिव अफेक्ट हो जाएगा और आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा.
So with this, we have reached the end of the session. I hope you all have understood. If you have not yet subscribed my channel, please do subscribe to get the latest update. Thank you.